Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss methods of preparation for tablet. Method of tablet preparation. There we have three types method of tablet preparation. First, direct compression method. Second, wet granulation method. Third is dry granulation method. Now we are going to discuss direct compression. Today the term direct compression or direct compaction is used to define the process by which tablets are compressed directly from powdered active drug substance and suitable excipient into a film compact without employing the process of granulation. ग्रेनुलेशन की प्रोसेस को बिना शुरू किए हुए, ठीक है, विदाउट ग्रेनुलेशन प्रोसेस और बिना ग्रेनुलेशन के जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और जो एक्सिपिएंट है उसको डायरेक्ट कंप्रेस करेंगे। जैसे नेम इंडिकेट करे डायरेक्ट कंप्रेशन, हम क्या करेंगे, जो ड्रग होगी और जो एक्सिपिएंट होंगे उनके ग्रैनुअल्स ना बनाते हैं, उनके क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेस करेंगे। सम केमिकल हैव फ्री फ्लोइंग एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी, सो दे आर एनेबल टू कंप्रेस डायरेक्ट इनटू अ टैबलेट मशीन विदाउट ग्रेनुलेशन ऑफ इट। कुछ सब्सटेंस जो केमिकल्स आपके पास ऐसे रहते हैं, उनका फ्री प्रॉपर्टी है, कोहेसिवनेस उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते, तो उनको ग्रेनुलेशन फॉर्म के थ्रू टैबलेट बनानी पड़ती हैं। Some chemical lacking of these quantities of some excipient like filler, disintegrate agent, lubricants and glidants are used to impart these qualities of production of tablet by direct compression. Some precaution must be taken during the direct compression to avoid the air entrapment which cause capping, splitting or lamination of tablet. एक कैपिंग, स्प्लिटिंग और लेमिनेशन ऑफ टैबलेट ये आपके पास डिफेक्ट हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब टैबलेट बन रही है आपके पास, कैपिंग और लेमिनेशन यहाँ के बेसिकली होता क्या है, सेपरेशन ऑफ अ टॉप और द बॉटम क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टैबलेट। जो मेन बॉडी टैबलेट है आपके पास, वो टॉप और बॉटम उसके पास अलग अलग हो जाएंगे, वो आपके पास क्या रहती है, ये डिफेक्ट्स हैं। फोर्स फीडर और इंड्यूस फीडर आर यूज टू रिड्यूस एयर एंट्रैपमेंट, मेक फिलिंग पाउडर मोर dense and amenable to compaction. Capping also may be caused by punch that are not perfectly clean and too much fine granulation. Some aged or improperly stored tablet also may exhibit splitting and other physical deformations. Now, wet granulation. Granulation is a process in which primary powder particles are made to form large and these type of multi-particles called granules. किसी भी पाउडर फॉर्म का एक बड़ा पार्टिकल जो हम फॉर्म करते हैं उसे हम ग्रैनुअल्स बोलते हैं, और जो मल्टीपल्स पार्टिकल आपके पास होते हैं उन्हें ग्रैनुअल्स बोला जाता है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ग्रैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल इन द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज 0.2 to 0.5 mm. ग्रेनुलेशन प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या करता है कि टूटने से बचाता है पाउडर की कॉन्स्टिट्यूएंट को, इम्प्रूव द फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर, इम्प्रूव कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर एंड रिड्यूस टॉक्सिक डस्ट. Wet granulation is widely used method for production of compressed tablet which include following step. First step है weighing and blending. In this step, specify quantities of active ingredients, diluent or filler and disintegrant agent are mixed by mechanical powder blender or mixture until uniform. Most widely used filler are lactose, microcrystalline cellulose, starch, powder sucrose and calcium phosphate. Selection of filler depends on the experience of manufacturer, cost and compatibility with formulation. Among the filler, lactose is most preferred because of its solubility and compatibility, and microcrystalline cellulose because of its easy compaction, compatibility and consistent यूनिफॉर्मिटी ऑफ सप्लाई. मेनली हम ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, लैक्टोज और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को एज अ फिलर. नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, इंक्लूड क्रॉस कार्मिलोज, कॉर्न एंड पोटैटो स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल पॉलीप्रोपाइलिडोन पीवीपी, कैटायन एक्सचेंज रेजिन,
organic acid, and other material which swell or expand on exposure to moisture and help to break up tablet in gastrointestinal tract GIT, mainly cross carbamylose and sodium starch glycolate are used because of their high water uptake and rapid action. Mostly up to 5 to 10% of starch is suitable for formulation, but up to 20% may be used to facilitate more rapid tablet disintegration. The total amount of disintegrant is not always used, but sometimes it added in preparation of granulation and sometimes half of it's added to tablet formulation, which called double disintegration of tablet. One portion of disintegrant assist breakup of tablet into pieces and other portion break up pieces into particles. डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन में आपके पास क्रॉस कार्मिलोज, स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पीवीपी, जो डिफरेंट टाइप के आपके पास एक्सिपिएंट हैं ये मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास जो स्टार्च आपके पास रहता है वो मोस्टली 5 टू 10% तक इसको यूज़ किया जाता है, पर इसकी कंसंट्रेशन को 20% तक मोर इंक्रीज करते हैं फॉर रैपिड ऑफ टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे एक और चीज़ रहती है, हमारे पास जो भी स्टार्च का अमाउंट है और डिसइंटीग्रेंट का हमारे पास जो अमाउंट रहता है वो वन टाइम यूज़ नहीं करते। किसी केसेस में आपके पास हाफ ऑफ द पोर्शन जो रहता है वो ग्रैनुलेशन के टाइम उनको ऐड किया जाता है और हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ जो डिसइंटीग्रेंट है वो हम करते हैं टैबलेट के टाइम, ताकि आपके पास जो टैबलेट है वो ईजिली डिसइंटीग्रेट हो सके। और ये जो प्रोसेस है डबल टाइम एड इन का मीन्स हाफ पोर्शन ग्रैनुलेशन के टाइम और हाफ पोर्शन टैबलेट फॉर्मुलेशन के टाइम, इसको बोला जाता है डबल डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now the preparation of dump mass. A liquid binder is now added to the powder to facilitate adhesion of powder particles. A dump mass resembling dough is formed and used to prepare the granulation. A good binder is very important for hardness of tablet and does not hinder the release of drug from the tablet. Most widely used binder are povidone, and aqueous preparation of cornstarch 10 to 20%, methyl cellulose 3%, carboxy methyl cellulose and microcrystalline cellulose. Some drug may be adversely affected by an aqueous binder, then non-aqueous solution or a dry binder may be used. The amount of binder is a part of operation which maintain integrity of tablet after compression. However, care must be exercised not to over or under wet powder, otherwise under wet can result to hard granules of proper tablet formulation, and over wet can result to soft and tend to crumble in under wetting. After getting desired dump mass of colorant and flavorant may be added to prepare a granulation with then added फीचर्स। एक वेट मास आप फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक एक्वस, ठीक है, वाटर के साथ जो स्टार्च का पेस्ट रहेगा या डिफरेंट टाइप आपके पास जो एक्सिपिएंट्स बाइंडर हैं उनके साथ एक वेट मास हम फॉर्म करेंगे, सॉफ्ट वेट मास फॉर्म होगा। और कई अगर आपके पास ड्रग्स हैं वो आपके पास एडवर्स इफेक्ट शो करती है एक्वस फेज के साथ, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। और अगर वो आपके पास सुटेबल नहीं है, एडवर्स रिएक्शन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ड्राई बाइंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रिपरेशन पे मेनली हमारे पास फोकस रहता है आपके पास वेट जो डो रहेगा वो ना आपके पास अंडर वेट कंडीशन में होना चाहिए और ना आपके पास ओवर वेट कंडीशन में होना चाहिए टू प्रिपेयर एक्यूरेट ग्रैनुल्स। Now the screening dump mass into pellet and granules. Dump mass is prepared through 6 or 8 mass size to prepare granules. This process may be done by hand or by a special equipment which prepare granules by the extrusion process. The final product are spread on large piece of paper in tray and dried.
Drying and granulation. Granul- Granules may be dried in a special drying cabinet which is thermostatically controlled at a constant record the temperature and humidity. Fluid bed dryer and tray dryer are commonly used for during these process. Size and granulation by dry screening. After drying, the granulation are passed through a screen of a small mass, then the use of prepare the original granulation. The size of granulation depend upon the size of punches to be used. Usually 12 to 20 mass size are used for granulation. Sizing of the granules is necessary so that the die cavity for tablet compression may be completely or rapidly filled by the free flowing granules. Void or the air space left by too large a granulation result in a problem of uneven tablets. Adding of lubrication and blending. After drying screening, a dry lubricant is spread over the granulation through a fine mesh screen which contribute to prepare a compressed tablet. Among the most commonly used lubricant like acetal, magnesium stearate, calcium stearate, stearic acid, sodium stearyl, fumarate in the range of 0.1 to 5%. Lubricants improve flow property of the granules from offer to die, prevent adhesion during the compaction, reduce friction between the die and the punch and provide a sheen fine final product. Now the some special wet granulation techniques are high shear mixture granulation, fluid bed granulation, extrusion, सैफिरोनेशन और आपके पास है स्प्रे ड्राइंग. Now dry granulation. In this method, powder mixture is compressed in a large piece and subsequently broken down or sized into granules. In this method, either active ingredient or dilute dilution must have cohesive property. This method is basically applied to material which cannot be prepared by wet granulation because of moisture degradation property or a thermal mobile property of granules. It is carried out by the two step. First आपके पास है slugging और second one है roller compaction. Slugging बहुत important है, ठीक है. After weighing and the mixing of ingredients, a powder mixture is slugged or compressed into large flat tablet about 1 inch in a diameter. Slugs are then broken up hand or a meal and passed through a screen of a desired mass of sizing and sometime lubricants आर एडिड एंड प्रिपेयर बाय कंप्रेशन. स्लगिंग आपके पास एक प्रोसेस है, मतलब आप एक टैबलेट बना दोगे उस इंग्रेडिएंट्स और जो सभी की, ठीक है, मिक्सचर की, उसकी एक टैबलेट फॉर्म होगी, फिर उसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, कुछ जो पीसीज होंगे, ठीक है, उस पीसीज को आप पास आउट करोगे, स्किन करोगे, ठीक है, पर्टिकुलरली मैश साइज से, ठीक है, और आपके पास क्या रहेंगे, ये ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है. तो और आप क्या करोगे, लास्ट में लुब्रिकेंट्स को ऐड करोगे. रोलर कॉम्पैक्शन क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्लबिंग पाउडर कॉम्पैक्टर may be used to increase the density of the powder by pressing it between the roller at 1 ton to 6 ton of pressure. The compact material is broken up, sized and lubricated and tablets are prepared by compression. Commonly used binding agents are methyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, which produce good hardness and friability of tablet.